बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं याकूब मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नॉलेज हब। तमाम तहसीलदार एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने जा रहा है। उसमें 3 पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और रेवेन्यू लॉज का पेपर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर रेवेन्यू लॉज का पेपर है। रेवेन्यू लॉज का पेपर MCQs बेस होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस वजह से इसके लिए एक एक नंबर की बहुत ही अहमियत होती है। तो रेवेन्यू लॉज के पेपर के लिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से रेवेन्यू लॉज के पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे और नेगेटिव मार्किंग से बच सकेंगे और एक्यूरेट आंसर कर सकेंगे। हमने 20-20 नंबर की 4 से 5 वीडियोस काफ़ी सारी इस रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड तैयार की हैं, तो उनको आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आइए आज हम तहसीलदार रेवेन्यू लॉज के पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 22, power of revenue officer to summon persons to give evidence and produce documents. A revenue officer has the power to summon any person whose attendance he is considered necessary for the purpose of giving evidence or producing documents in any inquiry or proceeding under the Act. Point number 2, Section 23, summons to be in writing, signed and sealed. Every summons issued by a revenue officer shall be in writing, signed and sealed by the officer issuing it. Point number 3, Section 24, mode of service of summons. A summons may be served by delivering or tendering a copy thereof signed and sealed by the revenue officer. Point number 4, Section 26, mode of making proclamation. If a person to whom a summons has been issued fails to attend, the revenue officer may issue a proclamation requiring him to attend. Point number 5, Section 28, language of revenue officer. The language of revenue officer shall be such as may be prescribed by the government. Point number 6, Section 30, power of revenue officer to enter upon any land or premises for purpose of measurement. A revenue officer may enter upon any land or premises for the purpose of measurement or inspection. Point number 7, Section 32, proceeding held on holidays. A revenue officer may hold proceeding on holiday if he considers it necessary. Point number 8, Section 36, rules regulating appointment of village officers. The government may take rules regulating the appointment of village officers. Point number 9, Section 37, village officer cess. A village officer cess may be levied on the landholders in the village. Point number 10, Section 41, periodical records. The revenue officer shall prepare and maintain periodical records of land revenue. Point number 11, Section 44, determination of disputes. The revenue officer shall determine disputes regarding land revenue. Point number 12, Section 46, mutation fees. Mutation fees may be charged for the registration of mutations. Point number 13, Section penalty.
assuming this refers to a section related to penalties for non-compliance or other offences under the Act. Point number 14. Section 49. Rights of government in mines and minerals. The government has rights in mines and minerals as prescribed by the Act. Point number 15. Section 56. Assessment of land revenue. Land revenue shall be assessed according to the rules and procedures prescribed by the Act. Point number 16. Section 56A. Exemption of land revenue. Certain lands may be exempt from land revenue as prescribed by the Act. Point number 17. Section 57. Basis of assessment. The basis of assessment of land revenue shall be as prescribed by the Act. Section 58. Limits of assessment. The limits of assessment of land revenue shall be as prescribed by the Act. Point number 19. Section 80. Process for recovery of arrears. The revenue officer may take proceeding for the recovery of arrears of land revenue. Point number 20. Section 81. Notice of demand. A notice of demand shall be served on the person liable to pay the land revenue. तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में से हमने 20 अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया, अहम टर्म्स को, अहम सेक्शंस को डिस्कस किया है। इन सेक्शंस को आप अच्छे से याद कर लें, ये आपको रेवेन्यू लॉज के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको एक्यूरेट आंसर देने में बहुत ही हेल्प करेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।